I have a dream, a song to sing, to help me go with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future. Even if you fail, I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the street. I have a dream, I have a dream, a fantasy to help me through reality. And my destination makes it worth the while, pushing through the darkness, still another mile. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the street. I have a dream, I cross the street. I have a dream, I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of the fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the street. I have a dream, I'll cross the street. I have a dream. As we were saying, that it's a beautiful start, I have a dream, to our today's event, because the School of Jaipuria has a dream for social consciousness, for conscious transformation, which is why we are celebrating today the 6th edition of the spiritual retreat. So on behalf of Anjali ma'am, Pramani ma'am, our Vice Principal Deepa Vahi ma'am, and all our children and our teachers, on behalf of the entire State MR Jaipuria team, I welcome you all to the 6th edition and the final day of the spiritual retreat. This was also my first experience of the spiritual retreat, and I have to say, Anjali ma'am, a personal thank you, because it wasn't here, we weren't here just to, children here, we're not here just to hear and listen to talks. There was so much learning here happening, which we will see through the presentations. So I invite the first group, Perseverance, and they will perform on Main Kaun Hoon. We spoke a lot on love, and love has a nature to be received. But before receiving and giving love, we must all learn who are we, what are we, how can we give love, and that is what the first group will present. Good evening to all of the one present here. This was a first experience that added immensely to our enriching journey.
of spirituality. The motivational talks by all speakers have inspired us to continue our quest for the betterment of our being and to connect with the divine. Each experience in this journey was a conscious offering to the divine that would help us to consciously transform our personalities. हमारी तरफ से आप सबको नमस्कार। आज का विषय हमारे प्रथम दिन के विषय हु एम आई पर आधारित है। आज हम आपके सबके सामने एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो एक फिल्मी गीत पे आधारित है। बहुत ही कम ऐसे गीत होते हैं जिनके अंदर आध्यात्मिक शब्द मिलते हैं, परंतु अगर हम अपने नज़रिए को बदल लें तो कोई भी आध्यात्मिक शब्द हम कहीं पे भी कोई भी फिल्मी गीत में पा सकते हैं। और हाँ, अगर हम किसी के पिक्चराइजेशन पे जाए तो फिर उसमें कुछ नहीं, बस आपको एक साधारण सी प्रेम कहानी मिलेगी एक लड़का और एक लड़की के बीच में। और हाँ, अर्थ बिल्कुल पूरा वेदांत की जो टीचिंग्स हैं, मर्म है, गीता की जो टीचिंग्स और मर्म है उससे मैच करता है। इसके आप लिरिक्स देखेंगे तो वो एकदम प्योर हैं, इसलिए इस गाने का चुनाव हमने किया है। गाने का बोल कुछ ऐसे शुरू होता है, मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक। इसमें हर तरफ मेरा ही विस्तार है और यहाँ मैं का अर्थ दूसरा है। यहाँ मैं क्या है, इसमें स्तर का अंतर है, बड़े और छोटे होने का अंतर है। जो छोटा मैं है वो हमसे शुरू होके हम ही में ख़त्म हो जाता है, और जो मैं यहाँ कहा जाता है वो जो उस एक की सत्ता है, जो उस एक की सत्ता है वही मैं कहलाने योग्य है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि तुम्हें मेरे पास आना ही आना है, सिर्फ मैं हूँ, तुम्हें मेरे पास आना है, चाहे जिस रास्ते से आओ। तो सत्ता सिर्फ उस एक की है, आत्मा की है। तो ये मैं जो यहाँ पे है वो हमारे अहंकार नहीं है, जो समाज से बने हुए हैं, विचारों से बने हुए हैं, सामाजिक ज्ञान से बने हुए हैं, ये वो मैं नहीं है। यहाँ पे जो मैं दर्शाता है वही टोटल सेल्फ है, वो जो हर जगह मौजूद है, वो जो उस एक की सत्ता है, वो आत्मा कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। आप में, मुझ में, पत्तों में, पहाड़ों में, हर जगह इस ग्रैंड सेल्फ की बात होती है। आपके जो मैं होते हैं वो बड़े छोटे होते हैं, जिसमें मैं हूँ और आप हैं। ये मेरा और ये तेरा, ये होता है। इन सब बातों की कोई जगह ही नहीं है, सब कुछ टोटल सेल्फ है और वही रियल है। उस मैं की बात इस गाने में की जा रही है, और पिक्चर में तो ऐसा लगता है कि जो पिक्चर का नायक है वह नायिका से कह रहा है कि तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही मैं हूँ। लेकिन हमें इसकी पिक्चराइजेशन पे नहीं जाना है, क्योंकि वह निर्देशक के मन की कहानी है। लेकिन इस गाने में एक बहुत ही गहरा अर्थ छुपा हुआ है, जिसे समझने में हमें भूल नहीं करनी है, हमें इसे अच्छे से समझना है। और यह इसीलिए मन को भाता भी है, क्योंकि यह पूर्ण को दर्शा रहा है, और उसी ज्ञान के साथ, उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारा नृत्य भी वैसे ही होगा। और उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस ज़मीं से आसमां तक। मतलब जहाँ रास्ता हो, रास्तों पर चलने वाले लोग हों, कारवां हो, वहाँ सब जगह मैं हूँ। और इस ज़मीं से आसमां तक जितना कुछ हो सकता है, समझ में आ सकता है, दिख सकता है, उन सब में मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। डुअलिटी के लिए कोई जगह नहीं, दूसरा कोई नहीं, मैं ही मैं हूँ। तेरी मोहब्बत ने रखा है मेरे सर पर ताज, कि तुम्हारे ही प्रेम से तेरी मोहब्बत ने रखा है मेरे सर पर ताज, कि यह जो आनंद है वही ताज है हमारा, और कोई ताज का अस्तित्व हो भी तो नहीं सकता। तो असली ताज है, द रियल क्राउन इज़ द आनंद, सो योर लव हैज़ गिवन मी दैट क्राउन। तेरी मोहब्बत ने रखा है मेरे सर पर ताज, यहाँ पर जो शांति है, आनंद है, बिकॉज ऑफ योर लव, एंड दिस इज़ द क्राउन, दिस इज़ द रियल क्राउन। इस धरती पर तेरा मेरा मिलन हुआ है आज, ये सिर्फ अध्यात्म में ही संभव है। जो हमारा झूठा अहंकार है, ये सब इसमें समा जाता है। यह सब मिलता है क्योंकि ये भी उसी दिशा
उसी दिशा में मिल जाता है। वहाँ पर मांगना मांगना सब रुक जाता है। मांगना तो इनकम्प्लीटनेस की निशानी है। जहाँ पर आप पूर्णमदः पूर्णमिदं समझते हैं, वहाँ पर फिर क्या मांगना। फिर तो यह भाव होता है, फिर मांगा हुआ देखा कि कितना मांगा है। तू जो चला डालकर मेरे हाथ में हाथ, सारी सजाएं चारों दिशाएं अब है मेरे साथ, कि तुम्हारे होने से अब और तुम एक हो गए हैं। अब मैं चिड़िया भी देख पाती हूँ, पेड़ को भी पेड़ जान पाती हूँ। सबके साथ मेरा एक अच्छा कनेक्शन है। माउंटेन्स, रिवर्स, सबके साथ मेरा एक अच्छा कनेक्शन है। तू जो चला है डालकर मेरे हाथ में अपना हाथ, सारी दिशाएं चारों दिशाएं सारी फिजाएं अब है हमारे साथ। चारों दिशाएं अब कुछ छूटा ही नहीं, अब सब है हमारे साथ। मैं उपलब्ध हूँ हर जगह और सब कुछ चारों दिशाओं से उपलब्ध है मुझे। ऐसा मिलन है ये, मुझ तलक जो आए न वो रास्ता कोई नहीं। मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक। जो कुछ भी देखोगे मुझे उसी में पाओगे, रास्तों से कारवां तक। इस धरती पे तेरा मेरा मिलन हुआ है आज। मिल गया सब कुछ मुझे, लब पर दुआ कोई नहीं। तू जो चला है डालकर मेरे हाथ में अपना हाथ, सारी फिजाएं चारों दिशाएं अब है मेरे साथ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपके सामने एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस ज़मीं से आसमां तक। मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस ज़मीं से आसमां तक। मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। ने रखा है मेरे सर पर ताज, तेरी मोहब्बत ने रखा है मेरे सर पर ताज। इस धरती पर तेरा मेरा मिलन हुआ है आज। मिल गया सब कुछ मुझे, लब पर दुआ कोई नहीं। हो मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस ज़मीं से आसमां तक। मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही मैं हूँ. It is true. God is everywhere, and before everywhere, He is within us. So God, मैं ही मैं हूँ. Now I'm sure all the parents must be wondering, what were these kids doing for the past 5 days? You could only have one call with them. So do you all want to know what they were doing? What was it? Okay. So the next group protection is bringing the presentation, spiritual retreat का सफरनामा. So let's see. Let's go on the right. Over to you, group. चलिए देखते हैं स्पिरिचुअल रिट्रीट में बॉयज़ ग्रुप 1 का सफ़रनामा।
एक ऐसे गगन के तले जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। चलिए देखते हैं स्पिरिचुअल रिट्रीट में बॉयज़ ग्रुप 1 का सफ़रनामा। पापा पापा, क्या आप जानते हैं कि मेरे विद्यालय में स्पिरिचुअल रिट्रीट का प्रोग्राम हो रहा है? अच्छा, बताओ कितने दिनों का प्रोग्राम है ये? 5 दिन का पापा। 5 दिन? ऐसा क्या इनको सिखाना जो ये लोग 5 दिन ले रहे हैं? अरे पापा, जब स्पिरिचुअल रिट्रीट है तो कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअलिटी ही तो सिखाएंगे। चलो अच्छी बात है, जाओ घर पे बैठे बैठे करोगे ही क्या। ठीक है पापा, थैंक यू पापा। अच्छी बात है, जा रहे हैं, वैसे भी घर के बैठे बैठे करता ही क्या ही है। स्पिरिचुअल रिट्रीट में पहुंचने के बाद बच्चों की क्या दिनचर्या है, आइए देखते हैं। अरे हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे अपने घर से बेडशीट, पिलो कवर्स, योगा मैट लेकर आए हैं और वह सारे काम खुद से करते हैं। ये एक मॉडर्न गुरुकुल वाली फीलिंग दे रहा है, जहाँ पर बच्चों को एसी, स्मार्ट बोर्ड और सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। अब चलिए बिना समय व्यर्थ करे आइए देखते हैं बच्चों ने क्या सीखा। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोय, जा मारग साहब मिले, प्रेम कहाँ वे सोए। सच में नंदिनी दीदी और उनके साथियों ने अपने विचार कितने अच्छे से प्रस्तुत किए हैं और वास्तव में आत्मा के प्रति खिंचाव ही तो प्रेम है। हाँ मित्र, जब हम किसी सामने वाले की ओर आगे जाएं उसी ही तो प्रेम बोलते हैं। परंतु मोह वो होता है जो हमको आगे बढ़ने ना दे और हमको अंधेरे की ओर खींचे। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आत्मा को अमर और अविनाशी है, जिसे ना शास्त्र काट सके, जल उसको गला ना सके, अग्नि उसे जला ना सके और वायु उसे सुखा ना सके। यह तो ऐसा जीव है जो व्यक्ति के कर्म फल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में हमें भटकता रहता है। हाँ मित्र, तुम सही कह रहे हो। Sri Shraddhalu Ranade ji explained some of the inventions of India in detail. He told us about Alexander, informative books such as the Vimana Shastra, which is the book of technology, the Bhumandala, which is the orbit around the earth, and the Saurya Mandala, the orbit around the sun. Well, do you all know about Triphala, which is a combination of 3 fruits which can treat the most dangerous cancer? Isn't it fascinating how the iron pillar in Delhi, which is exposed to sunlight, sunlight, and moisture, heat, yes. Moisture and dust, and it has never rusted. Yes, that's amazing. The Qutub Minar was built by Qutbuddin Aibak. It has 365 steps, 7 floors and 12 sides. Now, this may look like a pretty common monument, but here's the fun part. The 365 steps actually denote the 365 days of an year, and the 12 sides They denote the 12 months. Yes, and the 7 floors denote the 7 days in a week. Yes. चलिए हम इस प्रेजेंटेशन के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। हम एक महान हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं। उन्होंने माउंट एवरेस्ट जैसे विशाल पर्वत पर भारतीय झंडा फहराया है। वह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही हैं। Mrs. Tulika Rani, we can never forget her words. When we hit a rock bottom, there's only one way. From here, the way only goes upwards. We can't thank Mr. Atul Satyakausalji enough for his explanation of Saket, one of the famous work of Sri Mithali Sarangupta. His explanation enlightened us on the hurdles faced by Lakshman's wife Urmila in the union with Lord Ram and her husband in the 9th Swarg. Wait, this is not the end of our presentation. We all children had prepared a song for all the mothers present here, which we would like to present. Also, in this spiritual retreat, for 5 days we were away from our mothers. But we never felt like that, as respected Anjali ma'am and respected Promini ma'am never did let us feel like that. They were with us every moment and accompanied us.
माँ मम्मा, ओ माँ मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। ओ खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा, ओ माँ मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। अंजलि मैम, उस दिन आपने हमें जो कविता सुनाई थी वो हम सब बच्चों को बहुत अच्छी लगी, और हम सब बच्चे चाहते हैं कि उस कविता को एक बार आप फिर रिसाइट करें, कुछ पंक्तियाँ रिसाइट कर दीजिए। हमें वो कविता बहुत अच्छी लगी थी मैम। हे कृष्ण, हे कृष्ण, मेरी कविताएं सब कृष्ण को समर्पित हैं। कविता का शीर्षक है आ दरस दिखा मेरे मन में, खोजूं तुझको वन उपवन में, दर्शन दे दे जड़ चेतन में। हे प्रभु, हे कृष्ण, कहाँ छिप रहा है मुझसे, आ दरस दिखा मेरे मन में। मैं जानू हूँ, मैं जानू हूँ, मन के जल में छल है, छल है, उसे कहाँ ले जाऊंगी। माया है, अहम का दलदल है, तेरा है तुझ पे चढ़ाऊंगी। क्योंकि बाहर तो कोई अपने पास उपचार ही नहीं है हमारी माया का, हमारे छल का, हमारे दलदल का। एक वही ईश्वर है जो उसकी सफाई पुछाई करके हमको वापस दे सकता है। मन के जल में छल है, छल है, उसे कहाँ ले जाऊंगी। माया है, अहम का दलदल है, तेरा है तुझ पे चढ़ाऊंगी। मन रूपी जल को निर्मल कर बार बार छनवाऊंगी। तेरे सहस्र नामों की पंखुड़ियों से कमल बनवाऊंगी। तेरे ध्यान के सूर्य से नित्य प्रकाश दिलवाऊंगी। भजनों की मंद बयार से इस कमल को खिलवाऊंगी। फिर कहाँ छिपेगा, कहाँ लुकेगा, फिर कहाँ छिपेगा, कहाँ लुकेगा। मन तो दर्पण बन जाएगा, मन मंदिर के कमलासन पर तू प्रतिबिंबित हो जाएगा। आना तो तेरे हाथों है, जब आना है तब आएगा। आना तो तेरे हाथों है, जब आना है तब आएगा। आने पर द्वार बंद होंगे, बंदी मेरा बन जाएगा। धैर्य है मुझ में, धैर्य है मुझ में, तुझे शीघ्रता नहीं करनी होगी। धैर्य है मुझ में, तुझे शीघ्रता नहीं करनी होगी। नियंत्रित कर इन भावों को, विरह अग्नि मुझे सहनी होगी। मुझे भी यह एहसास है, मुझे भी यह एहसास है, तेरे लायक बन जाऊं तो। मुझे भी यह एहसास है, तेरे लायक बन जाऊं तो। इस मैले मन को, मैले तन को पहले सद्भाव से लूँ मैं धो। सद्भाव और समर्पण के कपड़ों से अंग तो ढक लूँ मैं। सद्भाव और समर्पण के कपड़ों से अंग तो ढक लूँ मैं। फिर भक्ति भाव और प्रेम भाव के गहनों से तो सज लूँ मैं। हे कृष्ण, तेरी प्रेमिका जब तैयार, हे कृष्ण, तेरी प्रेमिका जब तैयार हो जाए तुझसे मिलने को, फिर देर न करना मेरे प्रभु, आ जाना दर्शन देने को। तेरी थी, तेरी हूँ, तेरी ही रहूँगी हे प्रभु। अंजलि अहम की चढ़ा करके दर्शन करूँगी रूबरू। Wonderful, ma'am. Thank you, ma'am. Please give her. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I think with Anjali ma'am's poem,
the audience, we all can truly feel the essence of the spiritual retreat. And continuing that essence of spiritual retreat is the next group, Progress, and they are here to present you the reflections on spiritual retreat. Vande Mataram, everyone. I am Sonakshi Mishra of class 8th, Nuff region, and today we will be representing our group discussion in front of you all. I would like to start this with my self-composed poem. The title of my poem is Who Am I? Who am I? I am a soul meant to be free and fly, to be perfect and grow like a flower, to become that divine's sitar. I learned about myself and the glorious divine, the one who connects all of us with a single line. How to be learned, how to be better in the right way. How to be learned, how to be still the right way. How to be better every single day. How to aspire, seek answers and anand. I learned about my country and culture and identity. The goal of my very life is to be closer to the divine, to be courageous and refined. Before my name, I am my soul first. None of us has to worry because God is within us. Thank you. Vande Mataram, everyone. I am Ichha Singh of class 9th, Nuff region. I am honored to be a part of this spiritual retreat. Today, I am going to reflect my thought about what I have learned on the very first day of this retreat. So, Anjali ma'am talked about the aim of the spiritual retreat. She told us the two mottos. One of the mottos was from Kung Fu Panda Master Shivu. It was as, if you only do what you can do, you will be never better than you are. In this, the words are so clear. We can easily understand this. We need to grow. We should never stop growing. A time comes when we feel, that's it, I am the best. But no, we need to work harder and harder to be better than the best. We learned that there is no limit of being best. Shiv Kumar sir also talked about it. In this, Master Shifu says that we should not only do which we can do, otherwise we will never progress. As Lord Krishna says, to become the nature of the divine, we need to achieve perfection. I will make sure and will definitely try to grow day by day to achieve perfection. Now, I would like my friend Khushi to speak. Vande Mataram, everyone. I am Khushi Sharma of grade 8. The talk of Sri Shivdas sir enlightened us about the best. We cannot be best always. If we are, then life will be so monotonous. Our today's best cannot be best for a lifetime. So we need to assure that every time. We need to best our. Being the best also means that we are capable of expressing our mesmerizing thoughts. Not only this, but also we need to focus on the task which we are performing. We need to have a clear mindset on the target. If we are focused on the target, we will be on our best. For being best, we need to have a strong willpower. Thank you. वंदे मातरम एवरीवन। मेरा नाम नेत्रजा तिवारी है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैंने प्रेम के वार्तालाप से जो सीखा है, मैं आज वो बताऊंगी। प्रेम अर्थात आत्मा के प्रति खिंचाव। आत्मा के प्रति खिंचाव, वास्तविक प्रेम जो होता है वो हमें हरितिमा प्रदान करता है। हम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, बस उसके हित के लिए हम उसे कभी कभी कठोर बोल देते हैं, पर वह भी प्रेम होता है। Now, as yesterday Anjali ma'am has explained very well about, very beautifully about love, that it is not an emotion, it is a decision. At the end, I would like to thank everyone present here. Vande Mataram to one and all present here. I am Mehak Chaurasia of class 8th. Today, I'm going to speak about the talk by Shri Atul Satya Kaushik ji, which was on Saket, poem by Shri Maithili Sharan Gupta. Saket is the word which means Ayodhya. This poem highlights a character in Ramayana that I think was ignored. We were so influenced towards Prabhu Shri Ram and Sita Mata that we forgot her.
but now it's time to finally reveal her. She was none other than the wife of Lakshmanji, Urmila. As I'm saying this, many of you must be thinking, what kind of sacrifice? So, let me tell you that, except Urmila ji, each one of her sisters, Sita Mata, Sukriti ji, Manvi ji, each one of them were with their husbands, whereas Urmila ji did not go with her husband. She was in loneliness for 14 years, which is a long time, though her love became strong. So I learned from this that except the main characters, we should also look into the other characters, their sacrifice and their devotion, and only literature can give us the freedom to do so. Now I would like Shrishti to speak. Vande Mataram everyone, I am Shrishti Sharma of Navsrijan. Yesterday we heard an informative talk from Tulika ma'am. She is a mountaineer and a wonderful lady. She taught us that the acceptance to try our best is important and we should embrace ourselves to progress. When she failed to climb Mount Everest and tried next time, the Everest was not same for her. For her, the mountain was not just a mountain. It was the taunts of the people which hurts her every step she climbed. She had financial issues, but prepared herself to face the challenges of her life. Although it was difficult, but her determination and consciousness made her to do it. She climbed the Mount Everest and really did change the meaning of failure. For me, failure is not really failure, it is the chance to do our best. I would like to end my reflection by a quote on failure, that failure is not opposite of success, but is a part of success. Thank you. Vande Mataram everyone, I am Ritika Sharma of class 9th. At the end of this amazing session of spirituality, I want to reflect what I have learned. I have learned that every problem of the world has a spiritual solution. When you get connected to divine and consciousness, you get the real meaning of life. Divine has love and peace. Love is not only a simple word, it is a feel of attraction that attracts the soul. Divine also help us to get evolved for every moment to be best out of best. Because there is nothing same. World is meant to be evolved. When we talk about spirituality, Sanskrit flashes in our mind. As we know that Sanskrit is originated from the roots, that is why it is known as the mother of all languages. Sanskrit throws light on all other languages too. India has given birth to several masterminds. They didn't become mastermind easily. They reached there because of their great focus and ultra level of consciousness, which took them from higher mind to super mind. We don't need to find divine. It is within us. We just need to get introduced to it. For this, consciousness is the mean of communication to divine. At last, we come to this conclusion that if you want to see success, you need to do everything with consciousness, because consciousness attracts the focus. Thanks to Anjali ma'am for accepting us as a part of this spiritual retreat and making us aware of peace and consciousness. Thank you, ma'am. How could you not be part of the spiritual retreat? You're part of the school, an integral part of the school. I would like to tell you all what I think love is. Love is that when you let the person you love go, but also make sure that they do what is right and best for them. The same way, dandelions let their seeds go at the end so that those tiny little seeds can grow up and become beautiful individual flowers and make their own identity. I think that is true love. Thanks to all. The artwork has been done by you, Sonakshi? Yes, ma'am. It's just beautiful. Thank you, ma'am. Exceptional artwork. Thank you, Sonakshi. Thank you, Navsrijan girls. You all were exceptional. Thank you. Well, I believe now we have truly understood what the spiritual retreat was all about. So moving on, as we are deeper into the spiritual retreat, I think we all want to be happy, do we? Yes or no? But do we know the secret of happiness? Do we? You tell us, ma'am, we don't know. That the next group of students will tell us. So the next group, the students have collaborated, the group Purity and Strength,
and they are here to present सुखी जीवन का रहस्य। चलिए जानते हैं। कृणाली जी देखिए, ये लोग क्या बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम सही हैं। नहीं नहीं, आप गलत हैं। देखिए, सांसारिक सुख ही वास्तविक सुख होता है। नहीं, सांसारिक सुख वास्तविक सुख नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, आप सब चाहे जो कुछ भी कह लीजिए, मेरी दृष्टि में तो सांसारिक सुख ही वास्तविक सुख है भाई। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर दो दलों के बीच वाद विवाद चल रहा है। जो दल मेरे बाईं ओर बैठा है, उनका यह तर्क है कि सांसारिक सुख ही केवल वास्तविक सुख है, और जो दल मेरे दाईं ओर बैठा है, उनका मत यह है कि आध्यात्मिक सुख वास्तविक सुख होता है। तो चलिए हम लोग इस चर्चा का क्या निष्कर्ष निकलता है ये देखते हैं। अरे निष्कर्ष क्या निकालना है, बात तो स्पष्ट है, समक्ष है। अरे चलिए चलिए उदाहरण से समझते हैं। हाँ शाश्वत जी, आप जरा यहाँ आएंगे। यह देख रहे हैं आप, आपकी माता जी ने खास आपके लिए यह जलेबियाँ भिजवाई हैं। जलेबी? जी जी, मेरे लिए? पूरी सब खा सकता हूँ? पूरी ग्रहण करें कृपया। क्या बात है, आहा क्या बात है, उत्तम। कैसा लग रहा है आपको शाश्वत जी? हेवन हेवन। तो आर्या जी, रुचि जी और नंदिनी जी, क्या आप इस आनंद को झुठला सकते हैं? क्या आप इस सुख को झुठला सकते हैं? नाउ प्रूव इट टू मी दैट आई एम रॉन्ग। और साथ ही साथ देखिए कि ये किस तरह से खा रहे हैं, जरा स्पष्ट करें इस बात को। अगर कोई बात सच्ची है तो उसमें अपने आप इतनी ताकत आ जाती है कि वो हमारे दिलो दिमाग पर छाई रहती है। सुख की अनुभूति यह है कि वो हमारे अंदर स्वतः रहती है, उसके बिना हम जीना नहीं चाहते। तो क्या हम सुख की ये व्याख्या कर सकते हैं कि सुख वही है जिससे हम कभी भी परेशान नहीं होते, जिससे हम कभी भी ऊबते नहीं हैं, जो हमें भाए वह है सुख। अरे सौरभ, कहाँ से तुम इतने थके हारे आ रहे हो? बस खराब हो गई थी। सॉरी मैम, बस खराब हो गई थी तो चल के आना पड़ा। धूप इतनी तेज थी कि। कोई बात नहीं, चलो बैठो, आओ चलो बैठो। कृणाली जी रुकिए। जी जी, मैं आपको अब एक उदाहरण देना चाहती हूँ सौरभ के माध्यम से, और बात को स्पष्ट करने के लिए। तो सौरभ आप यहाँ पर आइए। आर्या जी, क्या आप शरबत ला सकती हैं? और शाश्वत आप भी यहाँ पर आ जाइए। अब यह शरबत शाश्वत और सौरभ दोनों पिएंगे एक साथ, और एक जैसा ही शरबत पिएंगे। प्लीज़ पीजिए। अब इसमें से सबसे ज्यादा सुख किसको मिला? ऑफ कोर्स सौरभ को, क्योंकि वह धूप से जो आया है। गौर करना, वस्तु और चीज एक ही है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी एक ही है, पर क्यों सुख की मात्रा में यहाँ पे फर्क है। सिंपल है, मैं यहाँ छाव में बैठा था इसलिए मुझे शरबत की प्यास नहीं थी, और क्योंकि ये धूप से दौड़ के आए। इंटरप्ट। प्यास का अनुभव सुख है या दुख? ऑफ कोर्स दुख है। अरे भाई, प्यास किसे अच्छी लगती है? अब इसी बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, कंटिन्यू। मुझे प्यास कम थी, और क्योंकि ये धूप से दौड़ के आए हैं तो संभवतः इनको आनंद की ज़्यादा अनुभूति हुई होगी। तो यहाँ पर क्या हम ये कह सकते हैं कि शरबत तो वही ही है, पर ज़्यादा सुख का अनुभव करने के लिए उसे पहले लंबे समय तक प्यासा रह करके अपनी प्यास को और बढ़ाना होगा। नहीं नहीं, आप तो इस बात को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हैं। अरे प्रत्युष, इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की कोई बात ही नहीं है। मैं तो यूनिवर्स ट्रुथ की बात कर रही हूँ। तुम ही बताओ कि मैं सही हूँ। करेक्ट। तो प्रत्युष, सुख की बुनियाद क्या है, शरबत या प्यास का दुख? उसकी प्यास का दुख। अरे भाई, जो कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा सा ही सही सुख का अनुभव तो हुआ ना इन्हें। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि शरबत से हमेशा सुख ही मिलेगा, दुख नहीं? जी। राइट? राइट। ठीक है, तो आर्या जी
आप थोड़ा सा और इनको शरबत पिलाइए शास्त्री जी को। नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल प्यास नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल प्यास अरे, नहीं है। मैं बिल्कुल प्यासा अरे नहीं हूँ। प्यास का दुख खत्म होते ही इनका मुंह बिगड़ गया। बिगड़े तो बिगड़े, हम तो इन्हें आनंद देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, इसलिए इनको और हम पिलाएंगे शरबत। बिल्कुल नहीं, कीजिए। मैं बिल्कुल प्यास नहीं हूँ। मैं बिल्कुल प्यास नहीं तकलीफ हो रही है। और क्या? पर सुख तो शरबत में है ना। ओके ओके, आई एम कन्विंस्ड। मतलब जितना शरबत की प्यास होगी उतना ही सुख होगा, और अगर उसके अलग ही देखें तो वही बाद में दुख भी बन जाता है। और आपने इनका बिगड़ा हुआ मुंह तो सभी ने देखा ना, तो हम कह सकते हैं कि सारे भौतिक सुख दुख से इतने जुड़े हुए होते हैं कि जैसे ही दुख गया, सुख भी जो होता है वह भी दुख में ही बदल जाता है। और जैसा कि हमने पहले ही सुख की व्याख्या की थी कि सुख वही है जिससे हम कभी भी ऊबते नहीं हैं। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट। हम अपनी बुद्धि से इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हमारा ईगो इसे नहीं स्वीकारता। पर कन्फ्यूजन में नहीं, सत्य को स्वीकारना ही समझदारी कहलाता है। तो सच क्या है? सुख कहाँ है? I mean, करना क्या है? छोड़ना क्या है? वास्तव में यहाँ पर दुख को छोड़ने की बात हो रही है, जीवन को नहीं। ईर्ष्या को छोड़ना है, मैत्री को पाना है, क्रोध को छोड़ना है, क्षमा को पाना है, भय चिंता इन सब को छोड़ना है, और निर्मलता स्वस्थता को पाना है। क्योंकि यही तो वास्तव में हमारे भीतर के दुख हैं। लेकिन इन सब सुनहरी बातों से अंत में क्या पाना है? आनंद में जीवन को ही पाना है। कैसा होगा वह सुख जिसमें हम किसी व्यक्ति या वस्तु पर आधारित ही ना हो, किसी और के ऊपर हम अपना बोझ ही ना डालें, हम सतचित्त आनंद से मिले। हमारे अंदर जो सतत है, निरंतर सुख है, हमारी आत्मा में हम उसके साथ रहें, वह है वास्तविक सुख। और मैं क्या बताऊं आपको अपने इस वास्तविक सुख के बारे में, वह ये रसमलाई या जलेबी में या फिर राज संपत्ति में नहीं है, क्योंकि एक बार को अगर वो हमें मिल भी जाए तो उससे मन ऊब जाता है। पर हमारे अंदर की जो आत्मा है, उसमें जो है, उसमें जो प्रेम है, वो अनंत है और वो उबाऊ एकदम नहीं है। क्या ऐसा सुख सच में है? और क्या हम इसे पा सकते हैं? 100% पा सकते हैं, और 100% है भी। क्यों नहीं पा सकते हैं हम इसे? हमारे तपस्वियों ने इतने साल तपस्या की सुख को पाने के लिए, और तो और वह सुख ऐसा नहीं है, वह सुख वास्तविक सुख है, आध्यात्मिक सुख है, और आप भी वो सुख पा सकते हैं। वह हर जगह है, निरंतर है। बोल तो मैं बहुत ही रही थी आरंभ से, लेकिन आप लोगों ने तो मुझे मौन ही कर दिया। अब तो आप लोगों ने मुझे कुछ बोलने को छोड़ा ही नहीं। क्या इस बात को हम स्पष्ट कर सकते हैं कि किसी कथा के माध्यम से? हाँ, क्यों नहीं। उपनिषद में एक कथा है जिसका शीर्षक है सुखी जीवन का रहस्य। चलिए आइए उसे देखते हैं और समझते हैं। राजाधिराज महाराज राजमार्तंड सार्वभौम सम्राट चक्रवर्ती छत्रपति अन्नदाता ने घोषणा की है कि जो भी साम्राज्य के एक सुखी व्यक्ति की कमीज उन्हें ला के देगा, वो उसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे। सुनो सुनो सुनो। आप सुखी हैं? क्या आप सुखी हैं? अरे भैया, लगता है दुनिया में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं, तभी तो वो हाँ नहीं बोल रहे। सही बात है। अरे क्या आप सुखी हैं? हाँ, सुखी हूँ। क्या कहा आपने? हाँ हाँ भाई, बहुत सुखी हूँ। सुना सबने? सुना? हमें सुखी आदमी मिल गया है। क्या आप सुखी हैं? हाँ भैया, कितनी बार कहूँ? एक बार कहा तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन तुम्हारी कमीज कहाँ है? कमीज? क्या आपने राजा का निर्णय नहीं सुना? राजा को सुखी व्यक्ति की कमीज चाहिए। पर मेरे पास तो कमीज नहीं है।
क्या तुम्हारे पास कमीज भी नहीं है? ना। फिर तुम सुखी कैसे हुए? अरे भाई, मेरा सुख कमीज में नहीं है, मैं स्वयं ही सुख हूँ। चलो राजा के पास चलते हैं। महाराज की जय हो। गाड़ीवान ने कहा है उसके पास कमीज नहीं है, फिर भी वह सुखी है। सैनिक, उसे मेरे पास ले आओ। जो आ गया। महाराज ने आपको याद किया है, कृपया चलिए। पर वे मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मेरे पास तो केवल क्या है, मेरे पास तो एक बैलगाड़ी है, और बैलगाड़ी की सेवा लेकर वो क्या करेंगे? उनके पास तो भैया हाथी, घोड़े, रथ न जाने। राजा तुमसे बैलगाड़ी और तुम्हारी सेवा नहीं मांगते हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। पर मैं उनसे मिलकर क्या करूंगा? शायद वह तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हो। पर मैं उनसे पुरस्कार लेकर क्या करूंगा? शायद पुरस्कार से तुम्हारा सुख और बढ़ जाए, तुम अपने लिए कमीज खरीद सको। पर भैया, मैं तो बिना कमीज के सुखी हूँ। और ध्यान दीजिए, जितना मैं जानता हूँ, धन से वस्तुएं मिल सकती हैं, क्या धन से सुख मिलता है? और जो स्वयं ही सुख में पूरा परिपूर्ण है, उसमें भला और सुख कैसे समाएगा? राजा को अगर मुझसे मिलना है तो वे आ सकते हैं। कैसा व्यक्ति है ये? इसे तो कुछ चाहिए ही नहीं। सही कह रहे हो, अब निर्णय तो महाराज के हाथों में है, चलो उनके पास। चलिए। महाराज की जय हो। गाड़ीवान ने आने से मना कर दिया, अगर अन्नदाता को उनसे मिलना हो तो उन्हें स्वयं जाना होगा। और गाड़ीवान से मिलने राजा अपने मंत्री और सेवकों के साथ गाड़ीवान के गांव पहुंचे। भूरा, भूरा। अरे भाई, क्या बात है? महाराज तुमसे मिलने आए हैं। अच्छा अच्छा। भूरा। पर मैं पहले ही बता दूं भैया, मेरे बैल अभी सुस्ता रहे हैं, मैं उनसे अधिक काम नहीं कराता हूँ, मैं उनकी भी देखभाल करता हूँ, तो वो अभी सुस्ता रहे हैं और मैं भी सो रहा हूँ, मैं अभी कहीं नहीं जा पाऊंगा। भूरा, क्या तुम वास्तव में सुखी हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा भूरा, तुम जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। हाथी, घोड़े, दास, दासियां, जो चाहो मिल जाएगा, बस मुझे सुखी होने का रहस्य बता दो। पर राजा, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, फिर कभी आना भैया, तब बता देंगे। तुम कैसे इंसान हो कि तुमको राजा से भी डर नहीं लगता? अरे भैया, मेरे लिए तो सब एक समान हैं, चाहे वो कोई राजा हो या रंग। राजा हैरान था। दूसरी बार वह फिर दल बल के साथ आया। बुरा, हाथी, घोड़े, दास, दासियां, जितने चाहिए उतने मांग लो, बस मुझे सुखी होने का रहस्य तो बता दो। अरे भाई, मैं तो पहले से ही सुखी हूँ, अब मैं हाथी, घोड़े, दास, दासियां का क्या करूँगा? बुरा, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा, मुझे बस सुखी होने के रहस्य बता दो। जो स्वयं सुख की खान हो, उसे और सुख का लालच देना राजन बुद्धिमत्ता नहीं होती है। और राजा चला गया। उसे समझ में नहीं आया कि गाड़ीवान को क्या चाहिए था, और अचानक एक दिन वह अकेले गाड़ीवान से मिलने आया। हुकुम। आज फिर आ गए? महात्मन, मैं तब तक आता रहूंगा जब तक आप मुझे सुखी होने का रहस्य नहीं बता देंगे। अच्छा, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम मेरे पैर दबाओ पहले, तो क्या तुम वह भी कर सकते हो? जरूर। चलो रहन दो, आओ उठो। पहले ही ये अपना अहंकार का बोझ छोड़कर आ जाते तो मैं बता देता। तुम्हें ये सब मेरे पैर वैर दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर चलो अब पूछो, क्या जानना है? यह कैसा रहस्य है कि जिसके पास बहुत ढेर सारी कमीज है वह सुखी नहीं, और जिसके पास कोई कमीज नहीं वह सुखी है? ध्यान दो, सुख कमीज में नहीं है,
सुख है आत्मा में। जो उस अंतर स्थित आत्मा से संपर्क में रहता है, उससे जुड़ा रहता है, जो भीतर से जुड़ा हुआ है, फिर उसे बाहर के अधिक आडंबरों और प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती। उसका संसार के साथ एक सहज रिश्ता रहता है। लेकिन अगर सुख आत्मा में है तो फिर हमारा मन सुख के लिए बाहर की वस्तुओं के लिए क्यों पीछे भागता रहता है? वो इसलिए भागता है कि हमारी स्वतः प्रवृत्ति जो है वो बाहर की ओर है। लेकिन ध्यान दें, इसलिए जो हमें बाहर सुख मिलता है वो अस्थाई होता है। जो स्थायी सुख है वो तो मात्र आत्मा में ही है। धन्यवाद। उम्मीद करती होंगी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन का वास्तविक सुख है क्या। जी धन्यवाद, मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। धन्यवाद। शिफ्ट हो गया। How beautifully said. Sukh andar hai. And I believe we all are very happy enjoying this. So with the same Sukh, let us welcome the next group, Perfection. Perfection, there are 5 psychological perfections: sincerity, faith, devotion, aspiration, and surrender. So with the same surrender to the God, let us welcome the next group, and they will present their presentation on love and attachment. Good evening to one and all present here. Today we, the students of Group 1, Perfection, are going to present a skit based on the topic love and attachment. So let's dive deep into the incidents based on the differences on प्रेम और मोह। श्री कृष्ण का श्री राधा के प्रति प्रेम पवित्र, शुद्ध और निर्मल है। यह प्रमाण है कि यदि श्री कृष्ण विस्तार हैं तो सार है राधा। श्री कृष्ण की हर बात का आधार है राधा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त युग प्रवृतम अश्नामि प्रतायन। He who offers to me with devotion a leaf, a flower, a fruit, a cup of water, that offering of love from the striving soul is acceptable to me. Love helps us to see, and attachment makes us blind. One day, Shri Krishna had a glass of boiling milk. हे राधे, ऐसा क्या है राधा जी में जो आपकी हर सांस पर उनका ही नाम होता है? मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूँ। At that moment, Shri Krishna had blisters on his mouth, but the pain of the blisters could only be felt to Radha. After that, Radha had blisters all over her body, but the pain of the blisters could only be felt by Shri Krishna. This is what love is, where one feel pain for their beloved, where they show oneness between both. Radha and Krishna were not only bound for emotional love, but also, as we called it, moh. Their love is eternal. एक बार श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ शिव मंदिर गए थे। वहाँ उन्होंने अपनी पत्नियों की परीक्षा लेने के लिए महादेव से विनती की कि हे प्रभु, मेरे शीश में ऐसी पीड़ा कीजिए जो केवल किसी के चरणों की धूल से ही सही हो सके। महादेव ने ना चाहते हुए भी श्री हरि विष्णु की आज्ञा का पालन किया। जब मार्ग में जाते हुए श्री कृष्ण को पीड़ा का अनुभव हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नियों को बताया कि यह पीड़ा केवल और केवल किसी के चरणों की धूल को उनके मस्तक पर लगाने से ही सही हो सकती है। उनकी पत्नियों ने यह पाप करने से मना कर दिया। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर के साथ ऐसा पाप कर कौन भोगे। तभी वहाँ श्री राधा आई। उन्होंने सत्यभामा और रुक्मणी को देखा। उन्होंने कान्हा से पूछा, सखा तुम्हें क्या हुआ? तब श्री कृष्ण ने बताया कि उनके मस्तिष्क में
पीड़ा है जो कि केवल किसी के चरणों की धूल को उनके मस्तक पर लगाने से ही ठीक हो सकती हैं। तब राधा ने बिना कुछ सोचे अपने चरणों की धूल श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाई। किसी के प्रेम में वशीभूत हो जाना और अपना सब कुछ समर्पित कर देना ही सच्चा प्यार कहलाता है। In the epic of Mahabharata is a small instance which depicts moh, attachment. Here is the following incident between Duryodhan and Gandhari. गांधारी शिव जी की अनन्य भक्त थी। उसे शिव जी से वरदान मिला था कि वह जिस किसी को भी अपनी आँख की पट्टी खोलकर देखेगी वह वज्र के समान हो जाएगा। महाभारत का युद्ध अपने चरण पर पहुंचा। गांधारी ने पहले ही अपने 99 पुत्रों को खो दिया था। उसका पुत्र मोह भी चरम पर पहुंचा। एक बार गांधारी ने दुर्योधन को नग्न अवस्था में अपने पास बुलाया। दुर्योधन के वहां आते ही गांधारी ने तुरंत अपनी आंखों की पट्टी खोल दुर्योधन को देखा। जैसे ही गांधारी ने दुर्योधन को देखा, उसका शरीर वज्र के समान होने लग गया। उसका पत्तों से ढका वह अंग ही सामान्य रह गया। Attachment is our obscurity, our darkness. Unlike love, it doesn't liberate us. It doesn't allow us to think beyond ourselves and our needs. Attachment projects our understanding of love to others, just like Gandhari didn't realize that she was not protecting her son. It was an attachment that took over the best of her. कृष्ण है वंशी तो राधा तान मतवारी। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है वंशी तो राधा तान मतवारी। कृष्ण है श्रेष्ठ कृष्ण है वंशी तो राधा तान मतवारी। कृष्ण है The language of love is very easy. Radha Krishna's love story gives us the message. You will not fall for any attractions if you move on your given path. Only if you do not, only if you have a divine and pure love without any greed. We chose this topic because today's era does not understand the difference between these two terms, love or moh. We choose the path of love, the path of divine, because that takes us to the path of wellness of the world. Love is a force. Love is an action. Ayam bandhurayam neti gadna laghu chetasam udar charitanam tu vasudhaiva kutumbakam vasudhaiva kutumbakam vasudhaiva kutumbakam vasudhaiva kutumbakam. Well, that was beautiful, isn't it? So now with the same love, we continue this event. And we'll take a different twist now. We were talking about love and spirituality. Let us have a different twist. And the next group is here to present you the truth about surgery. So with a warm applause, let's welcome the next group. वंदे मातरम एवरीवन। ग्रुप 3 से हम सब ने एक लघु नाटिका तैयार की है जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते उसी में अर्थात become my minded, my lover and adorer,
a sacrificer to me. Bow thyself to me. To me thou shalt come. This is my pledge and promise. To thee art, too dear art thou to me. Vande Mataram, everyone. The topic of our skit is on what could have happened to a Britisher that learned plastic surgery from a potter, as told to us by Sri Shraddhaluji. Please note that we have taken a lot of creative liberty. There once was a British man who came to India in search of knowledge. He went to the beautiful city of Pune. He kept searching, but all the secrets were so well hidden. He knew that this country was land of Gyan, but none he could find. But in a stroke of luck, he learned one of the greatest secrets. This city has made me so tired. I have been walking and walking, and now my body is aching. Just to gain some knowledge. Is this the pain I have to receive? Oh God. Look, I think I see someone. I think he's a potter. Maybe he could help me. Oh Potter, as a citizen of this place, would you help me find the truths of life? Sure, young man. Come inside while I'll tell you something that I know. Oh Potter, why do you need so many tools for pottery? I have seen other potters make wonderful pots with just their hands and some sticks. Oh, you don't see these tools are not for pottery. Rather, they are for surgery. Can you teach me that? Can you please teach me that? I would love to see and learn. Sure, young man. Let me teach you with the help of this dummy. First, we will apply this medicinal paste on the face. Sir, why do we put this paste on the face? We put this medicinal paste on the face so that it does not harm the skin during the surgery. Oh. Now, we mark the places where we need to cut the skin. And now, with the help of the scalpel, we cut the skin. After all these processes, we put the bandages on and rest the body for 10 minutes. Ooh, this is wonderful, sir. Sir, can I take these tools back with me, back to my country, so that I could show my people what you showed me today? Why not? It's all yours. Thank you so much, sir. The Britisher took the tools from the potter and went back to his country. Good morning, my dear colleagues. Welcome back, sir. When did you come back? Oh, just today. Do you know what I learned? What? Oh, I learned about plastic surgery. A surgery in which I could change the face of a man. Nice joke, sir. Were we supposed to laugh on this? This is not a joke. I am serious.
Sir, this is not possible. Many people have tried it and failed. You are not so special to pull it off all alone. I might not be so special, but I am sure talented. Sir, I think you are not well. Please take some rest. I am in perfect mint condition. I am perfectly fine. If you are just so confident about it, then prove it. Sure, why not? Bring me the patient. Hold my tools for me. By the way, sir, why do these tools look stolen? They are not stolen. Rather, I created them myself. I hope that his family has taken the life insurance. He doesn't need life insurance, my colleague. Oh God, please save this man. I hope he stays alive. You will see he's alive. God knows. Just wait for 10 minutes and you will all see. I bet he is not alive. After 10 minutes. Now hold this while I wake him up. Wake up, my child. Wake up. How is he alive? What kind of black magic is this? This is not black magic. Rather, this is science. My science. Sir, I apologize for insulting you. Sir, we are sorry. All is forgiven, my child. Sir, could you please teach us this knowledge? Sure, why not? Thank you so much, sir. And this is how a man who knew nothing became the father of modern plastic surgery. कबीर दास जी ने कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। अर्थात जिस प्रकार हिरन अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी की सुगंध को वन वन में खोजता फिरता है, उसी प्रकार हम सबके हृदय में ईश्वर है, किंतु हम उन्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि जगहों पर खोजते रहते हैं। इसी प्रकार हमारे आसपास ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति एवं आपसी सद्भाव मौजूद है, फिर भी हम इसके खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं, जबकि सब कुछ हमारे भीतर ही है। धन्यवाद। Vande Mataram, one and all present here. The most inspiring personalities in these 5 days of spiritual retreat was Miss Tulika Rani ji, a mountaineer. She inspired me so much that I penned down a few words for her. So here I, Arif Pratap Singh from class 7D, present those lines. I saw someone who had a dream to rise up and never wants to ever give up. The person who states the resistance towards failure is perseverance. Someone who tried but failed and sadly was called a failure. She who heard a lot for an ear but didn't give an ear. I have finally found my inspiration. She who has to climb the tallest volcano in the world, her future expectations. I have finally found my inspiration. She who had a dream to rise up and never give up. Thank you. So you see, not only were we learning about spirituality and oneness, we were also learning about the deeper culture of our country. Now, while I was looking for the name of the next group, it is called receptivity. What is receptivity? The meaning is that help is always there, and you must just allow yourself, keep the receptivity living. So with that, I welcome the next group, Receptivity, with their presentation, Receptors, Receptacle. Hermann Hesse has rightly said, and I quote, "Within you there is a stillness and a sanctuary to which you can retreat at any time and be yourself." Unquote. Vande Mataram to one and all present here.
We, the boys of Group 4, are privileged to be here for a presentation on the final day of the Spiritual Retreat Edition 6. We will depict a dramatic form of the treasure which we will take away from these 5 days of enlightenment and awakening. We hope you will like it and request you to forgive our follies. Good morning, sir. Good morning, students. Please sit down. Thank you, sir. So today we will be learning about matter. So can any one of you tell me what is matter? Arav. Sir, anything occupies space is known as matter. So, it also contains mass. Both of you, well done. Please sit down. Thank you, sir. Children, please take out your notebooks. We have to do questions and answers. Have you all done? Yes, sir. Very good. Excellent handwriting. Rohan, why haven't you done the work? Actually, sir. The second period is started. Have a pleasant day. Which period is this? Sir, it's yoga period. So children, make a line for the yoga room except Rohan. Okay, sir. Rohan, what's the matter, child? Oh, sir, nothing. Oh, child, don't lie. I've been seeing you're not doing your work and you look visibly upset. So if there's a problem, please tell me. Sir, the burden of our parents' expectation and the constant work is getting in my head. It feels like I'm a nobody. I get you. Many people feel the same way as you because they're only supporting one being on themselves. I didn't get you, sir. There are 4 parts of yourself. Your physical, vital, mental, and psychic being. And you're only supporting your physical being, and even then, you're not supporting it properly by eating junk food. So, sir, how would I support all the beings? It is simple. Do yoga to improve your physical being and help it to connect to the other beings. Express yourself through artwork to support your vital being, and do question and solve problems to improve your mental being, and meditate to support your spiritual being. If you're successful in supporting all these parts, you might have a new outlook towards life. Okay, sir, I will start supporting all these beings from right now. If you need some help in that, you might consider joining the spiritual retreat program, where you would learn this and much more, such as the question, who am I? Okay, sir, I will definitely join the spiritual retreat. Thank you, sir, for this advice. I hope to see you there. Now go to the yoga room. Thank you, sir. Hello, Nile. Hi, Rohan. Are you enjoying the spiritual retreat? Oh, I'm loving it. Well, I'm loving it too. Did you like the Perseverance talk? It was so fascinating and relatable to me that I took each and every note. But did you take notes? Yes, I agree with you. That speech was very relatable, and I think the speech was really good and inspiring. Yes, I did take notes, but I have a question for you. What? Which is the favorite topic of yours? Oh, my favorite topic. My favorite topic is when we discussed about the book Saket. It is a poem. It is not a story, but a poem which describes the struggling of Urmila in Ramayana. Nobody talked about her. And Urmila had to stay without her husband, which is Lakshman, for 14 years. Can you imagine that? Living without the one you loved, without any support, and for even 14 years. How miserable and bad she felt. I can't even think of that. And in the book Saket, it is the only book of Ramayana which tells the perspective of Urmila. That's a gorgeous thing. Now,
I wanted to ask you one more question. What? Or it is my first question, I shall say. It is that which topic did you like the most? The topic that I liked the most was about Sri Aurobindo, the mother, and how you can connect to the instruments. How can you become the perfect instrument of God? Wow. I chose these topics because since I was a child, my mother has been telling me stories about Krishna and Shiv. And when I got to know that I can meet them in real life, my interest increased by 500%. But let's not forget about Sri Aurobindo and the mother, because they were geniuses of India who, I mean, you think who did path our way to the divine. Am I right? yes, you are right. I think they did so much for our country, and they carved out a path for our country so we can go to the divine. Yes, you are right. But now I have one more question. Please and tell. It might be last, I don't know. I am very curious guy, you know. My question is that, was Ramayana written in Sanskrit or in Hindi? Obviously, it's written in Sanskrit. Sanskrit. Why Sanskrit? Sanskrit is not a useful language, what I think, and nobody speaks Sanskrit. Why is it so useful and why should we learn Sanskrit? No, Sanskrit is a very important language, and I will start the discussion about this later. Okay. Have a pleasant day, Rohan. Thank you. हाय हरमन, तुम Hello, कैसे हो? हेलो रोहन, मैं तो बहुत अच्छा हूँ. तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ. अच्छा रोहन, तुमने कोई ऐसा अलग प्रश्न सुना जो तुम्हारे मन के भीतर समा गया? हाँ, मैंने एक अलग प्रश्न सुना जो मेरे मन के भीतर समा गया. वह प्रश्न मेरे प्रिय मित्र ने सारांश भी ऐसे पूछा था. अच्छा, वह प्रश्न कौन सा था, हमें बताना नहीं चाहोगे? वह प्रश्न था, हम संस्कृत क्यों पढ़ें? क्योंकि संस्कृत हमारी रोजमर्रे की भाषा नहीं है. अच्छा, तो सारांश भैया ने उस प्रश्न का क्या उत्तर दिया, ये बता सकते हो? सारांश भैया ने उस प्रश्न का यह उत्तर दिया कि हमें पहले खुद पढ़ना चाहिए, फिर दूसरों के बारे में सोचना चाहिए. हजारों करोड़ों लोग में एक दो ही तो महर्षि अरविंद आए हैं. कितने आए हैं? विवेकानंद, गिनती में हैं ये लोग. अच्छा, तभी हमें संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए ताकि हम उनकी भाषा समझ पाएं. हाँ बिल्कुल. अच्छा, ये सब तो ठीक है, तो क्या तुम मेरे मन में एक सवाल बहुत दिनों से गूंज रहा था. वह सवाल यह है कि मैं कौन हूँ? हु एम आई? हम सब एक फिजिकल, मेंटल, साइकिक और स्पिरिचुअल बीइंग हैं. अच्छा, वो सब तो ठीक है, तो क्या तुम मुझे संस्कृत के महत्व समझा सकते हो? हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं. जल को हम अंग्रेजी में कहते हैं वाटर. वाटर से हमें क्या समझ आता है? कुछ नहीं. परंतु संस्कृत में इसके 27 गुण हैं. 27 गुण? वैसे गुण का क्या मतलब होता है? प्रॉपर्टीज. अच्छा, उनमें से एक वारी है. वारी जो जो आसमान में जाके आसमान में चली जाए. अच्छा, धन्यवाद रोहन मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए. आओ चलो साथ में चलते हैं. I am Ara Shukla from NDTV, right outside St. Amar Japuria School, where the 6th edition of Spiritual Retreat has just ended. Here I am waiting eagerly for the students to share their opinion and experiences about their camp. Good evening. Are you returning from the spiritual retreat? Vande Mataram. And yes, you are right. I am returning from the spiritual retreat. How was your experience in the spiritual retreat? Now, I am an awakened soul. Before going to the spiritual retreat, I was extremely lazy and clumsy. But after listening to the motivational talks and speeches that happened there, I have awakened my soul and carved out a better version of myself. Now, will you kindly throw some light on what you learned in the spiritual retreat camp? Nowadays, the main goal for students is to get good marks. But I don't agree with that. The main goal should be on working on their psychic being. And also, the speakers that came to the spiritual retreat gave us immense knowledge. Core of sportsmanship and importance of love.
I have heard that the specialty of Jaipurians is their activities. What about the activities that took place there? The activities there amused me very much. We did yoga, played outdoor games and indoor games as well. We had a Mother's Day activity and a Western music performance. We came up with a presentation by the end of the spiritual retreat. Will you now tell me about the speakers who were invited to give inspirational speeches? You will be surprised to know that some of the students that have been attending the spiritual retreat for the past few years have now become impactful speakers. Some of them are like Saransh Mishra and Krinali Nayak. Besides that, Mrs. Anjali Jaipuria ma'am, Dr. Vinod Solanki ma'am, Atul Satya Kaushik sir and squadron leader Tulika Rani blessed us with their motivational talks. Okay, so that sounds simply incredible. You have encouraged many people to join the spiritual retreat and awaken their soul. Thank you for your time. It was a pleasure to meet you, sir. Time has come to bid adieu, but before the curtain comes down, express our heartfelt gratitude to the school for giving us this marvelous opportunity, which has definitely enriched our souls along with giving us renewed energy and a purpose to our existence. We earnestly wish and pray that we create a life that feels good on the inside, not just the one that looks good on the outside. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I shall believe we shall overcome someday. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Well, with the next group, we're ending the performances, but we still have a few more left. The next group is Perseverance, and they are here to embody the message of the school, which is conscious transformation. So I welcome the next group, Perseverance, with their presentation, Conscious Transformation of Humans. We saw about love. Can anyone help me remind what all were the different topics that we learned about? Anyone from the audience? So we learned about love. Would anyone like to share their views about love? There was one presentation on that. Thank you, school management. Thank you very much for such a mesmerizing performance of the students. I seriously enjoyed, and I'm very well into this education system also. I take value education subjects. So value education is much more related with this only, that the conscious. We say that our body, we as a human being, we have two things. This human being is divided into self and body. So that is what I teach my son also, and that is what this school is also teaching. So we are like, I was like so much excited, but when we reached there at college level, students do not know about these things, self, body. They think that everything which is materialistic. But we know that it is actually right understanding that makes your self and body. We never say that we do not need any physical facilities for the same. They are required, they are essential part of the same. But yes, it is the right understanding which makes you believe that yes, you need physical facilities with yourself, right? And this is what I thought, like love, moh, prem, attachment. That was so mesmerizing for me to see that now when I'll take those students, these students, when they'll come to us, they'll have something in them. And this is what really is making me like, thank you so much, ma'am, for this initiative. Good evening, everyone. Vande Matram. On behalf of my group, I would like to extend our heartiest gratitude to our chairperson, Mrs. Anjali Jaipuria, our principal, Mrs. Pramani Chopra, our teachers, all the IT department members, and our support staff. Mrs. Anjali Jaipuria ने हम बच्चों को महान हस्तियों से रूबरू करवाया और इनकी इतनी ज्ञानवर्धक बातों ने हम सब बच्चों के दिलों को सराबोर कर दिया. So, B5 group presents a short journey of self-realization and self-discovery
of an ill-tempered and rude boy named Taksh to a calm, composed, and self-assertive young teenager. The scene opens with a day in a classroom. One day in school, all the students are gathered around Arya, who was showing his new pen, which he had received as a gift from his grandfather. Wow, what a pen! कहाँ से खरीदा? My grandfather bought it for me. Can I have a look? No, it's very precious to me. I won't give it to anyone. Please. Give it back. Wait, let me see it. Wow. Give it back. What a beauty. Please give it back. Oops. You dropped it? Sorry. Although Taksh pretended to be sad, yet he was extremely happy because it was his intention to break the pen. Sadly but truly, Taksh was envious of his classmates. The accident was deliberate. This is the second period. It is the mathematics period. Unfortunately, Taksh is not able to find his mathematics notebook. Taksh Wait. does not repeat his mistake of showing anger. Wait, where is my notebook? Maybe somebody stole it because my work is the best in the class. Wait, did you steal my notebook? Why would I? Did you steal my notebook? Taksh, actually, Yes. by mistake, I kept your notebook in my bag. So have it. My notebook? In your bag? Please leave. How it. dare you? I'm sorry. I didn't mean it. You did it on purpose. No, he didn't. And you need to apologize right now. No, I will not apologize. You are too arrogant. I will not apologize. Though Naitik insisted it was not intentional, yet Taksh was extremely rude and arrogant. He neither apologized nor accepted the sincere words. Taksh was getting too high-headed and obstinate in his behavior. It is the 9th period. It is the games period and the boys are preparing themselves for 100-meter race. So boys, on your marks, get set, go! Taksh is a good athlete, but he cannot see anyone else winning. Very selfish and self-obsessed. He pushes Rohan, and Rohan falls down and gets out of the race. Taksh is very happy, but he knows it was the wrong way of winning the race. Soon, in few months, Taksh realizes not only his friends, but his goodwill as well as his academics suffered. I don't even have a good friend. Good friend? I don't even have someone to talk to. In fact, my teacher was saying that I have faced a great downfall in my academics. What can I do? I am so disturbed and distracted by the things I have been doing. My favorite subject, Hindi, I was scoring so well last year. But this year, my teacher told me that my marks are going down. आर्ट माई फेवरेट वर्क जिसको मैं हर समय करता रहता था आज वही आर्ट मेरे से नहीं होता मैं इतना डिस्टर्ब आई हैव बीन सो डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ द वर्क द इल मैनर्ड थिंग्स दैट आई एम डूइंग उस दिन मैंने रोहन को एथलेटिक मीट में गिराया चाहे मैं जीता लेकिन वो मैटर नहीं करता है उसके बाद मैंने आर्य का पेन छीनकर उसको डेलिबरेटली गिराया और उसके बाद उसका पेन टूट गया जो उसके दादाजी ने उसको दिया था नैतिक के साथ तो मैंने हद कर दी उसका कॉलर पकड़ लिया मैं सब करना नहीं चाहता हूँ पर मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब क्या करूँ मैं Taksh, Wait, who are you? I am you. I am your inner consciousness, the Chetana inside you. And I want to awaken you for what you are and to become the perfect instrument of the Divine Himself. I want you to know that you are here for a purpose. And Taksh, you have to transform yourself so that He Himself can transfer
all his works through you to the world. Utho Parth, jago, still your mind. Control your negative thoughts and stay composed. मुझे कहीं और नहीं अपने ही अंदर ढूंढो पार्थ, प्लीज. वेट, मेरे पास एक दो प्रश्न नहीं है. आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. हु विल आंसर देम? Take this, Parth, take this. All your answers are there in this. वक्त बदलना है, डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया. Man is a transitional being. Arise, transcend thyself. Thou art man, and the whole nature of man is to become more than himself. Let's see how much Taksh has transformed himself. Hello. Look, he's here again. No. Hi, Arya. I am really sorry for that day. I didn't mean to break your pen. Or actually, I meant it because I was covered by the envy, the jealousy. I've got something for you. Thank you. It's okay. Sometimes we all go wrong. Hi, Naitik. That day, I was really out of my mind. मुझे नहीं समझ आ रहा था उस दिन मैंने कि क्या किया. मेरी मैथ नोटबुक हुई और सबको पता है कि मुझे मैथ से कितना प्यार है. तो उस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर गया. सॉरी. और अभेद्य, अगर उस दिन मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज ये नौबत ना आती. उसी दिन मैं सॉरी बोलकर सारा ड्रामा ख़त्म कर देता. I'm happy that you understood that. Everyone, I am really happy today because I was able to show my immense gratitude toward my friends. They were the people who made me realize my mistakes and told me what to do with my life. So let's keep the past aside and let's go and play because it's our game period. Yeah. इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्. अर्थात यह गीता के 3 अध्याय का 48वां श्लोक है. इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमारी इंद्रिया, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे कर्मों का स्थान है. हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो मन है, हमारा जो बुद्धि है, वो उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो डिज़ायर्स हैं, वो हमारी नॉलेज, हमारे ज्ञान पर उनको कवर कर देती हैं, उनको छुपा देती हैं और हमारी जो साइकिक बीइंग है उसको मोहित कर देती है. Conscious transformation in a person is when a person in his full chetana submits himself to the mighty being. And Taksh, through offering his actions and also by surrendering completely to the Almighty, was able to connect to the divine and the psychic being. As rightly said, समर्पण एंड सद्भाव के कर्म रूपी फूल जब ईश्वर को अर्पण करते हैं तभी हमारा जीवन निर्मल, अनुपम और सुंदर बनता है. Now I would like to invite Taksh for sharing his experience in the journey of this complete consciousness transformation. श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा. श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा. हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा. लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है. सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है. हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है. मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है. सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा. नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा. और हम आदम के बेटे हैं नहीं, और हम राम के बेटे हैं. क्यों सोचे राह सरल होगी.
कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। जब जब जीवन में तूफान आएंगे, आपके द्वारा दिया ये एहसान हमें राह दिखाकर सबल बदोएगा और हम अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से आगे चलते चले जाएंगे, आगे चलते चले जाएंगे। धन्यवाद। Wow, what a beautiful journey of Daksh and his transformation. I believe these students have truly embodied the message that the school is trying to spread. Now, we are here on the last performance. And what a beautiful way to end this day, because the topic is love. And the group is called Psychic Love. What is Psychic Love? It is strong and faithful. And it is so strong that it does not belie play. So with this, I invite our last performers of the day, Psychic Love. 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 The mother says, love is a mighty vibration coming straight from the divine. It is not merely the heart's hunger for affection or a vital attraction. It is an overwhelming force, a divine power that makes the vibrant flowers bloom, the wind blows, the sun rise, and is the reason for the existence of every single being. Love is perhaps the finest attribute of the divine. God is love. His love can be manifested in any form. Though we are incomplete, God loves us completely. Though we are imperfect, God loves us perfectly. Though we are lost sometimes and without a compass, God's love encompasses us fully. It is unconditional. खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी वा की धार, जो उबर सो डूब गया, जो डूबा वो पार. To cross the stream of love, we cannot love superficially. Our love has to be deep, profound, true, real. Only then can it make our life Amrit. Do you know, friends, during the course of this entire spiritual retreat, love has manifested itself subtly, entirely, every day. Don't believe me? Let's find out. Firstly, the love of our parents. Their true love, which trusted us enough to set us free for these few days, so that we can walk on the path of self-betterment and growth. They knew they would miss us bitterly, but they still let us go. That is love indeed. Then we turn towards a higher purpose. Why? Because we love the divine after all. And that's why we wish to seek Him. We also love ourselves. Why else would we opt out of a rat race and traverse on a path that is unique and spiritual? It is only because we love ourselves, and that is love indeed. Love is about choices after all. So, with Anjali ma'am as a torchbearer and Promini ma'am as a guide and mentor along the way, we commenced this journey. On the first day, Shivda expounded on doing one's best the integral way that can be achieved by attaining a flow state where we are in harmony and integrated with the task at hand. When we fall in love with what we have to do, when nothing else matters, and we connect with our psychic being, that is love indeed.
And what about those wonderful bonds that we created during these past few days among our friends, our peers, our teachers? That is love indeed. We all, however big or small, had gallons of fun together. That is love indeed. We slept with consciousness, we ate with consciousness, we walked with consciousness, full of love. That is love indeed. Love, love, and love. Day 2 was a day when we learned about true love by Nandini Didi. She explained to us that true love doesn't only adopt you but changes you for better. Ma'am Solanki elaborated us that man is a transitional being and we should show love towards everyone and it changes you forever. Like the first day we met each other like strangers, but now the affection between us is as if like we are siblings. On Mother's Day, we paid our heartfelt gratitudes to our mother and support staff, which emotionally connected us. The same evening, we saw Purna, which portrayed how Purna was motivated by her sister's love and unique bond they shared. During the stay, the lovable pillow fights and moments with our roommates made us huge and united us. Those who were strangers yesterday are akin to us today. On day 3, we learned that love is so intricately connected to our consciousness that the slightest stray would soil its essence. Do not error your consciousness by falling for tempting desires. The great Indian history has taught us that we, the Indians, retaliated against the corrupt, not out of hatred, but out of love for our India, for our country, out of love for our nation, and the love that we share when the silent pleas were left unheard. The mother has said that the divine's love is an eternal truth. And the Sri Shraddhaluji has also said that the truth is one. It is the wise that perceive it in many ways. We must become the perfect instruments, for we must understand that the flattest mirrors reflect the most light, reflect the most truth. Shri Atulis Kaushik Ji has showed us that history is what we are. It is what we are composed of. It is what surrounds us. It is what connects us. History is our truth. The story of Urmila and Lakshman is still prevalent among us in the modern times. As Deepa Vahi ma'am had so kindly informed us that even though it has long been since somebody has read the Ramayana or the Mahabharata, the epics of our India, there are still so many Urmilas that stay with us, that are there among us. The Urmilas who long, who wait for their Lakshman, their love to return home from the battlefield, and so many more that do not get to see the day. Love is what surrounds us. It is what connects us. It is what we are composed for. So we must understand that love is our ultimate truth. पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोया पंडित भय न कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई. Anjali's talk on love helped us understand what true love is. And in order to understand what love is, we must understand what love isn't. Love is not vital attraction and interchange. Love is not the heart's hunger for affection. We learned that love is a mighty vibration coming straight from the One, and that the very pure and the most strong are capable of achieving and manifesting it. God is everywhere, and God is love. Our obscurity, darkness, desires, and ego prevent us from receiving, from experiencing this divine love. Isn't that right, Adya? Yes, it is. Love is not bound by a vital barrier. It is beauty. It is a decision. It is liberation. And how could we forget Ma'am Tulika Rani, from whom we learned so much?
We saw her love for success, her love for her passion, and of course, her love for the divine who helped her throughout her journey. We saw that no obstacle, no failure, and no wall can stop you if you have the grit and determination. कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतार भुई धरे, पाथे घर माही। यह दोहा समझाता है कि अगर प्रेम के घर में प्रवेश करना है तो अपना शीश काटकर, यानी सब कुछ निछावर कर, सब कुछ त्याग कर ही आ पाएंगे। Love is devoid of expectations and demands. You should be ready to put everything at stake for your love for the divine. The journey is an arduous one. It makes you see your true self, but the result is sweeter than any divine fruit. With that, I, on behalf of Team 4, express our infinite gratitude to Ma'am Anjali Jaipuria, Promini Ma'am, and all the staff members who have given us this golden opportunity to spurt on our spiritual journey. We would like to conclude with a melodious rendition, namely Chand Se Pyara. चंद्रमा की चांदनी से भी नरम और रवि के भाल से ज़्यादा गरम है नहीं कुछ और केवल प्यार है, केवल प्यार है। ढूंढने को मैं अमृतमय स्वर नया, सिंधु की गहराइयों में भी गया। ढूंढने को मैं अमृतमय स्वर नया, सिंधु की गहराइयों में भी गया। मौत भी मुझको मिली थी राह पर, देख मुझको रह गई थी आह पर। मुश्किलों को जो दिखाता रास्ता, मौत पे जिसका नहीं कुछ वास्ता, वो नहीं कुछ और केवल प्यार है, केवल प्यार है। I told you, it was a beautiful way to end the night. What a tremendous performance by these girls. Well, now, I believe it is true then, that love has its origin in the creation of God, in the character of God. On this note, I would now like to turn the spotlight on the parents and the audience, anyone, teachers, students, and we would have a little session. So any feedback that you want to share about how did you like our students' performances? They've put really hard work, they've worked hard. मैम केवल 5 दिन का समय था बच्चों के पास, और इस 5 दिन में अगर बच्चों ने इतना कुछ तैयार करके हम लोग के लिए इतना मेहनत करके स्टेज पे परफॉर्म किया है, तो बहुत ही एडमायरेबल है, प्रशंसनीय है इतना कुछ कर पाना। और जितना ज्ञान इस समय ये बच्चे हमें देने लायक हो गए हैं, अब तो हमें ही इनसे सीखना पड़ेगा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे बड़ी खुशी है, मेरी ग्रैंड डॉटर त्रिशाला अग्रवाल जो कि लैरेटो में थी, लैरेटो से उसको यहाँ पे लेके आए। मेरा खुद इंस्टीट्यूट है, टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, लेकिन मैंने आज यहाँ का जो वातावरण देखा, जो हम लोग मिशनरीज स्कूल में जो जाते हैं वहाँ हिंदी कल्चर बिल्कुल है ही नहीं। ये जो आपने आज बच्चों को शिक्षा दी है सोल और प्योर सुपर सोल की, और जो हिंदी की और भागवत की, ये सब जानते ही नहीं ये लोग इंग्लिश स्कूल में पढ़ के। तो मुझे तो इतना अच्छा लगा कि कम से कम इस स्कूल में बच्चों को अपने कल्चर के बारे में कुछ पता तो चल रहा है। तो मैं तो टीचर्स को, और बहुत पहले तो टीचर्स को और कॉलेज को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम इस मिशन को जो है चालू रखा है बच्चों में हिंदुओं के, और मैं हिंदू तो नहीं कहूँगा, सनातनी धर्म के जो संस्कार
जो दिए हैं वो बहुत ही अप्रिशिएटिंग है, इसके लिए बच्चे और कॉलेज दोनों ही बहुत ही थैंक यू। मैं पूरे स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैंने बेटी को 8th में स्कूल चेंज करके यहाँ पे डाला था, बट ड्यू टू कोविड टाइम्स शी इज़ नॉट एबल टू अटेंड द ऑफलाइन क्लासेस, and I have already experienced the Jaipuria culture with my son. That's why I thought to bring her also in Jaipuria. But due to COVID times, it was late, and she has उसने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पिकअप करी, बिकॉज अर्लियर क्या था कि ऑनलाइन होने की वजह से उतने अच्छे से वो सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी, बट एनी हाउ शी पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग, डांसिंग and other quizzing, etc. But the overall, the complete awareness and transformation of the all the things, she came to me that कि spiritual retreat हो रही है मम्मी, मैं ले लूँ। हमने कहा जरूर लो उसको, at least these 5 days are a kind of you can say the backup of the your lost the 2 year of COVID. वो सारा 5 दिन में you may able to learn all the things जो पिछले 2-3 साल में तुम्हारा नहीं हो पाया है, and I have seen that she performed very well and she get aware about the many mythological things which are not possible due to their academics and other things, because बच्चों के पास उतना टाइम इस समय नहीं हो रहा था कि वो सारी चीज़ें भी हम सिखा पाए. So I am very happy with the progress she did here. Thank you, ma'am. Thank you, Anjali ma'am and Promni ma'am for bringing this opportunity to our kids. I would like to express my immense gratitude, and most important thing that the age, the classes which were chosen from grade 7 onwards, the teens which are most vulnerable, and it's the most apt age, and they are very receptive, they can understand also, and it is the right seed you have given to them, and I'm completely assured that you will nurture it further and further every year. Thank you so much. अंजलि मैम का ये प्रयास इस वर्ष को नहीं देख रहा हूँ मैं, तो इसको 10-12 वर्ष से भी ज़्यादा, लगभग 15 वर्ष से देख रहा हूँ, और जो उनके अंदर प्यास है कि हम जयपुरिया के बच्चों को वो ज्ञान दे सके जो बाकी जगह पर विद्यालय में कम से कम नहीं मिल पाता है। उनको अपने किसी को अपने घर में अच्छे संस्कार मिल गए तो मिल गए, और नहीं मिल पाए तो नहीं मिल पाए, लेकिन ये क्योंकि मैं बहुत सारे स्कूलों से जुड़ा भी हूँ लखनऊ में, तो मैं आपको आश्वासन के साथ ये भी बता सकता हूँ कि लखनऊ में कोई भी विद्यालय बेसिक संस्कारों के लिए जैसा जयपुरिया काम कर रहा है वैसा कोई भी काम नहीं कर रहा है। और आज हमने जो स्टेज पर यहाँ बच्चे देखे, इसमें इतने होनहार बच्चे दिखे जो कल को एक बहुत शानदार वक्ता बनेंगे और बहुत अच्छा समाज को आगे ले जाने वाले, दिग्दर्शन प्रदान करने वाले एक मार्गदर्शक बन सकेंगे। ऐसे बच्चों में बीज हमने यहाँ पर आज देखे हैं, ये बीज समय आने पे वृक्ष बनेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ पूरे विद्यालय की टीम को जिन्होंने इस कैंप को सक्सेस किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। LKG में हम एक छोटे से टाउन से लेके आए थे और बिकॉज ऑफ जयपुरिया ही लाए थे कि मतलब हमें यहाँ बच्चे पढ़ाना है। नाउ ही इज इन क्लास 12 आराध्य मतलब अनाज जो भी है वो बहुत सारे चेंजेस देखे मैंने इतने साल में उसके अंदर कि ही मतलब जो एक कहते हैं ना कि अच्छा इंसान बने। तो नाउ बिकॉज ऑफ यू एंड आई एग्री विद द सर एज ही टोल्ड दैट कि जो भी हम सिखाते हैं कुछ हम घर पे सिखा पाते हैं, कुछ तब बिल्कुल न्यू पेरेंट थे हम जब लेके आए, फिर बहुत कुछ आपसे सीखा, आपके स्कूल से सीखा, उस हिसाब से अपब्रिंगिंग की, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके अच्छा इंसान तो पक्का ही है। आई एम अ हैप्पी मदर फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड मैम, सो हैप्पी कि मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ा। आई एम सो सेटिस्फाइड कि यहाँ पे उसको जो एम्बियंस मिलता है, जो टीचर्स की नर्चरिंग मिलती है। आई वोंट सेट लर्निंग टीचिंग वो अलग चीज़ है, नर्चरिंग जो टीचर्स करते हैं दैट इज़ रियली कमेंडेबल मैम। और सारे बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, हैट्स ऑफ। थैंक यू सो मच मैम, ये अपॉर्चुनिटी मेरे बच्चों को, हम सारे बच्चों को देने के लिए, इट इज़ रियली आउटस्टैंडिंग मैम। आई एम इमेंसली थैंकफुल टू यू। Hi, good evening everyone. I am father of Riddhi and Kautilya, and both are here. So first of all, my deep gratitude to
to the leadership here. I think any culture which we see, it is a reflection of the leadership and foundation. And every time I come in any program of Jaipuria, it always qualifies that my decision for bringing my kids was right. In fact, when we have options to get them admitted in some other schools, and when I thought of like यहाँ पे culture है, values हैं, दूसरा मैं एक चीज़ और भी देखता हूँ कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली की वजह से हम लोग इतना रैट रेस में, ब्रेड एंड बटर अर्निंग में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि वैल्यूज़ और कल्चर की बात करने का टाइम तो मिलता ही नहीं. एक समय था जब बाबा, दादा, दादी सब साथ में होते थे, कंबाइंड फैमिली में हम बात करते थे, जहाँ से हम अपने ट्रेडिशनल कल्चर की बात करते थे. बट आज क्या होता है, परसेंटेज मार्क्स कितने आए हैं, नेक्स्ट एडमिशन क्या होगा और आगे करियर क्या होगा. और जब मैं एज ए HR इंटरव्यू लेता हूँ तो उस इंटरव्यू में हम लोग क्या देखते हैं कि वैल्यू बेस्ड कल्चर फिट होना चाहिए ताकि उसकी जो हमारे साथ सिनर्जीज हैं, प्रोडक्टिविटी है, वो बेटर हो. वहाँ पे मार्क्स और क्वालिफिकेशन सेकेंडरी हो जाती है. लेकिन अपने परिवार में और फैमिली में हम पुश करते हैं कि मार्क्स का और परसेंटेज क्या होगा. प्रोबेबली दिस इज द राइट बैलेंस वेयर वी आर पुशिंग और वी आर क्रिएटिंग सच एनवायरनमेंट कि दे आर गुड इन एकेडमिक्स as well as good balance of modern and traditional of taking this forward. I think this is good contribution from this institution, making India pride and more strong. Thank you. मैम, जो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो लगा बच्चों का सेल्फ कंट्रोल, जो आपने रियल हैप्पीनेस का यहाँ पे एक स्किट किया था, क्योंकि आजकल इतना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया है दैट वी कैन नॉट अफोर्ड ईच एंड एवरीथिंग फॉर आवर किड्स. एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग दे हैव लर्नड हियर कि रियल हैप्पीनेस कहाँ है, where it lies actually. तो वो बहुत ज़रूरी है. How can we control ourselves with our things, whatever we are having in our life. Thank you. एक भी शब्द नहीं है आज व्यक्त करने के लिए. सच बोल रही हूँ कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है. जब कोई सपना देखते हैं ना और फिर वो सपना सच होने लग जाता है धीरे धीरे और ज़्यादा, जैसे सपना एक बीज होता है और वो बीज आप सॉइल में डाल तो देते हैं पर आपको पता नहीं वो पनपेगा नहीं पनपेगा क्या होगा. आपने वो एफर्ट करा कि आपने उस बीज को बस सॉइल में डाल दिया. ऐसे एक सपना था बहुत साल पहले, 2000 करीब अराउंड देन, कि ईश्वर ने स्कूल दिया है. एक 1992 में स्कूल बना था और ये था कि स्कूल दिया है भगवान ने, इतने सारे बच्चे दिए हैं, तो ये बच्चे क्या बनने चाहिए. उसके साथ में ईश्वर ने श्री अरबिंदो और मदर भी दे दिए, तो एक रास्ता भी दे दिया. उस रास्ते पे चलने लग गए और कई ऐसे मोती मिले, ऐसे हीरे मिले कि जीवन की राह क्लियर होने लग गई. जीवन की राह तो क्लियर हो गई, खुद के अंदर तो काम करना बाकी था. तो खुद के अंदर वो काम कर रहे हैं और अभी बहुत सारा काम बाकी है. बट ये लगा अगर मैं कर रही हूँ ये काम अपने भीतर, तो इन बच्चों को भी अगर वो शेयर किया जाए तो कितना सुंदर होगा. ये भारतवर्ष को सुंदर करना है और एक ही एम है जीवन का कि नेशनल कैरेक्टर बदलना चाहिए. द नेशनल कैरेक्टर हैज़ टू चेंज बिकॉज दिस इज़ नॉट अस. जो हमारा भारतवर्ष था वो आज नहीं है. आज इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी जड़ें ही खोद दी गई और फिर जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो फिर अनफॉर्चुनेटली उन जड़ों को वापस लाया ही नहीं गया, वापस वो सीड्स डाले ही नहीं गए. वो हाफ ब्रिटिशर्स ही चला रहे थे देश को. 70-72 साल तो ऐसे ही चलता रहा. तो तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है जब देखते हैं कि हमारा अपना कैरेक्टर आज हमको यहाँ पे दर्शन नहीं मिल रहा हमारे भारतवर्ष में. बस यही एक सपना था. और हाँ जी बिल्कुल, मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है इस समय कहने के लिए, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब कोई बात करेगा कि पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना हो तो किस स्कूल में डाला जाए, तो आपस में हम लोग कहेंगे जयपुरिया. ये पर्याय बनेगा मैम. ये उसी रास्ते पे है. थैंक यू. ये भी एक जॉइंट वेंचर होता है जी. अगर एक विजन है कि फाउंडर्स का कोई विजन है जी, वो वहाँ बैठे बैठे विजन देखते रहें, सपने देखते रहें, कुछ कर सकते हैं अकेले? नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं.
जब तक हमारे पास एक प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल जी, ना जी, हो जिनको वो सपना दिखा सकें, जी फिर मैम। देखें कि उनके अंदर वो सपना का बीज तो डला, जी, जी। वो अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ। और एकदम जब सही। अंकुरित हो जाए तो उनको अपने नीचे इतने सारे टीचर्स को तैयार करना है। जी मैम। और फिर वो टीचर्स भी उसी सपने को देखने लग जाएं, तो फिर आपको लगने लगता है कि ये हम तो नहीं कर रहे हैं, यही मैम ऐसे हम कर ही नहीं सकते ये सब। ये ऊपर से एक एक ईश्वर का आशीर्वाद एक्शन है। जी, जी। इट इज अ एक्शन ऑफ द डिवाइन, जी। एंड इट इज द डिवाइन्स लव, because divine's love जी। is not just a feeling, it is an action. जी। And that action he is doing, जी, जी। and he is using us as his instruments, जी। and he's using you parents as an instrument also. जी, जी। ये हम लोगों का कोई कभी एक्शन है ही नहीं, नहीं, है। और सही इसका बात है। श्रेय कोई को भी लेना नहीं चाहिए। बस बार बार ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए कि थैंक यू फॉर शोइंग अस दिस डे। सही है। और आपको बताएं, जब 72 बच्चों ने दे रजिस्टर्ड फॉर इट, जी। तो मेरा पहला प्रश्न था प्रॉमनी मैम से, बताइए कितने पुराने बच्चे हो, कितने नए? तो मैम ने बोला 7-8 पुराने बच्चे या 9, जी। बाकी सब नए। जी। I said, oh my God, I really hope and pray that they will also clue in, that we will again be on the same page. I was not sure. जी। I was really scared. कितनी ऊंची ऊंची बातें करेंगे, बच्चे तो छोटे ही हैं, 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के बच्चे कितने बड़े होते हैं। जी। कि आप प्रेम की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं प्रेम फीलिंग नहीं है। अब एक 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को समझ आ गया कि प्रेम फीलिंग नहीं है, प्रेम एक्शन है। फिर उनको बताया जाए कि प्रेम एक्शन है, पर वो हमारा एक्शन नहीं है, वो डिवाइन से आ रहा है, वो डिवाइन का एक्शन है, वो छलनी हमारी है। जितनी छलनी मैली है उतना मैला हमारे पास और हमारे थ्रू एक्शन निकल रहा है। ये सारी बातें 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को, 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को समझ आना और फिर उसको यहाँ दर्शाना, बहुत बड़ी ये बात है। ईश्वर कृपा के सिवा कुछ नहीं है। जी, जी, जी। That's all that I need to say. Thank you. Dear Anjali ma'am, Vande Matram. In our spiritual journeys, you are the one who gently ushers us closer to our highest potentials. Your presence radiates immense positivity and vitality that unequivocally reminds me of a beauteous lotus. Gracefulness, sweetness, and sheer divinity are the qualities that are manifested by both. Ma'am, the loving way in which you invite all of us to consciously transform ourselves, irrespective of how far we have come on our path of spirituality, is heartening. For the 6th edition of the spiritual retreat, you yet again embraced us into your vast abode of consciousness, and we have emerged as spiritual beings who have learned how to become more than ourselves. This year, you enlightened us with the aim of the spiritual retreat and treated us to ask ourselves the question, who am I? Where we together traverse deep into our physical, vital, mental, psychic, and spiritual beings. Your diverse and deep understanding of Sri Aurobindo and the Mother's philosophy has helped us to introspect and learn about our inmost selves. Ma'am, your discourse on love emanated divine vibrations all around. Being the epitome of love yourself, there could not have been a better person to help us understand this topic better. I truly appreciate your incessant love and passion towards transforming us into conscious beings that helps us dive deeper into every beautiful spiritual concept, be it values, Bhagavad Gita, the Mother, Sri Aurobindo, lyrics of meaningful songs, meditation, and so much more. Truly, one glance at your persona makes me surmise you have already achieved a great connection with the divine. The cherubic smile that glows on your face is a testimony to that fact that can fill anyone with rejuvenated joy. The way you interact with any human being, be it teachers, students, guests, or the support staff, is overwhelmingly full of love. You are definitely an instrument of the divine's mellifluous music, who is now
on a mission to make all of us his instruments year after year. With warm regards and infinite gratitude. Thank you everyone for your patience and your time, and we hope to see you next year with the same enthusiasm. Thank you.